एक काफ़ी बड़ा समिट है। इसमें एग्जीक्यूटिव्स बहुत है, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो हैं। हेल्थ केयर में आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण ज़रिया बन चुका है लोगों तक पहुंचने का। और सिर्फ महत्वपूर्ण ज़रिया ही नहीं, क्वालिटी के ऊपर भी अब इंडस्ट्री का काफ़ी फोकस है, गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की बात करी। आयुष्मान भारत में दो चीज़ें बहुत सशक्त तरीके से प्रधानमंत्री ने बोली हैं। एक कि हमारी हेल्थ केयर जो है वो लास्ट माइल तक पहुंचनी चाहिए, मतलब एवरी पर्सन नीड्स टू रिसीव हेल्थ केयर। सेकेंड, हेल्थ केयर की क्वालिटी जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, यहाँ पर लगभग 300 से अधिक एग्जिबिटर्स हैं, जिसमें कि लॉट ऑफ पीपल आर एग्जिबिटिंग न्यू एज टेक्नोलॉजीज़, वेदर वो एआई की हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, वेदर वो न्यू अप्लायंसेस से रिलेटेड है, न्यू सेटअप से रिलेटेड है, नए इनोवेशन से रिलेटेड है। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट बनने के बाद ये सबसे बड़ा हेल्थ केयर जमावड़ा है। हेल्थ टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है इस टाइम इंडिया में, क्योंकि यूरोप से लेकर और टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उस पर जो हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लग रहा है, कितना फ़ायदा मिलेगा, दोनों तरफ से कितना फ़ायदा दोनों को मिलता है? जो आता है इलाज कराने आते हैं और जो यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट किया जा सकता है नए निवेशन। देखिए, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म जिसको कि आप हेल्थ केयर टूरिज्म कह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन चुका है। इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न कि इंडिया में क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर का काफ़ी ज़्यादा मापदंड जो है वो अच्छा रखा गया है। आज अगर हम देखें, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट्स के साथ लेस हैं। उसमें अगर आप देखें, पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश हमारे हॉस्पिटल्स में है। दूसरा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है वो लगभग विदेशी कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी कम है। अगर आप वही यूएस में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पर लिटरली जिसे कहते हैं ना, पेइंग आउट ऑफ द नोजेस, लिटरली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। हमारे यहाँ पर बिकॉज वी हैव गुड क्वालिटी मैन पावर, वी हैव more beds to be provided to people coming from these countries, and our turnaround time, हमारा जो turnaround time है towards a particular disease, a particular prevention and curability, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मुकाबले की अगर आप यूएस, यूरोप के कंट्रीज़ में चले जाएं। सो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म आज की डेट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया में हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा पुरजोर स्वागत भी करते हैं, बिकॉज इससे लोगों का जो जहन है इंडिया के बारे में कि इंडिया में कॉस्ट कम है तो क्वालिटी बेकार होगी, वो ख़त्म भी होता है। और हमारे को वैल्यू इसलिए मिलती है बिकॉज जितना जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाते हैं वो इसी कारण कर पाते हैं। सर, कितने एग्जिबिटर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस एग्जीबिशन में? जैसा कि मुझे बताया गया है, यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं। और बहुत गर्व की बात यह है कि इन 300 एग्जिबिटर्स में लगभग 60 to 65% डोमेस्टिक कंपनीज हैं, मतलब इंडियन कंपनीज हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि इंडियन कंपनीज आज की डेट में नई तकनीकी ला रहे हैं, नया इनोवेशन ला रहे हैं, और उसमें हमारे ही लोगों को क्वालिटी में बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ केयर, वेदर इट इज़ प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर, दोनों में बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। For Hungarian innovative healthcare companies on this exhibition. So thank you for the invitation and for this great opportunity to showcase the Hungarian healthcare industry. It is really important for us because some of them are in a situation that they have some experience, already on the Indian market. But some of them, just exploring the Indian market. So it is a very good opportunity for us again. And then, in Hungary, we have a very robust healthcare industry in terms of the know-how and the facilities. And that's why
we have a lot of innovations, and new things and new procedures, to offer for the Indian market. And that's why I think that it is really important, to get more and more companies on the board, in India, because our relations are really good with India, and we are working, to get more companies, to have more commercial and trade ties, between the two countries, because it is beneficial for both of us. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Dr. Chiba? Good morning, everyone. I am Dr. Rajiv Chibber. I am the Joint Coordinator, Government Affairs with IMED, which is Association of Indian Medical Devices. First of all, congratulations to Informa Markets for such a huge congregation of healthcare providers here. I think post the elections, as I said in my opening remarks also, this is one of the biggest congregations of healthcare providers, which has immediately happened after the election. So I think that gives everyone a sense that how healthcare has now become a fulcrum part of government, a fulcrum part of even industry to also excel into. So, at IMED, what we look at is when we talk about healthcare, it needs to tick box the 3 A's that the government looks forward to, which is affordability, accessibility, and availability. And when we look at that, technology becomes one of the biggest enablers in healthcare. Today, if you look at the size of the Indian medical device industry, it's already $11 billion. By 2030, it will be approximately around $50 billion, with more and more domestic manufacturers becoming net exporters. And this has happened over the last almost like couple of years with enabling policies. I think everyone must be knowing about the PLI scheme that the government of India looked into, the production linked incentive scheme that has really generated a lot of local manufacturing in India, which has created an export market for India in a much bigger way. I think technologies, when we look at innovation, when we look at quality clinical trials happening or conducted by Indian companies in partnership with global alliances, that has made a much bigger impact of how the healthcare industry can now really become one of those bigger industries that India can provide by Make in India for the world kind of a spiel that the Honorable Prime Minister talked about. And the other thing is that by 2047, which is the 100 years towards Indian independence, we are now looking at going beyond Atmanirbharta. When we say it is domestic Atmanirbharta, we want to also take it beyond India to become Vishwa Swasth Atmanirbharta kind of a spiel that we would take forward. So I think in all areas, the health tech, the med tech industry is excelling. I think today, if you look at the kind of spread of exhibitors who are here, they are not only from a particular segment itself. It's an entire genre of healthcare providers who are present here. Whether it is diagnostic industries, whether it is people into consumables, people into implants. I think each and every industry is represented here today. What we get to know about this is how partnerships can really be forged together. If you look at it, the Honorable Ambassador did talk about how India and Hungary are taking forward some technology partnerships forward. We've got so many international medical device as well as healthcare providers who are here at this conference, who are creating a bigger alliances with domestic manufacturers, and this will actually help India give the affordability quotient much better. So today, if we talk about all 3 tiers of healthcare, is going to impact all 3 tiers of people's lives also. So first tier is when we talk about the peri-urban and the rural healthcare. The second is the class 2 and the class 3 cities that we will be touching through Ayushman Bharat. And the top scale that we look at is in the metro cities itself, where quality healthcare providers, hospitals, and even health tech providers will be able to make an impact in the kind of technology that will be available to impact a lot of
diseases. It's not even communicable or non-communicable diseases, but even rare diseases that we need to look at. So I think all in all, this is one of the biggest congregations. We look forward to gaining more insights as sessions are there. And I'm really thankful to Informa Markets that they keep on doing such things in a very progressive way, in a very innovative way, bringing more enablers and providers at one platform. Thank you very much. Thank you, Peter. Thank you. Good morning, everyone, or good afternoon. India Health 2024 is a very big moment for Informa. You might wonder why now? Why has it taken us so long to bring a healthcare event to India? So I thought I'd just give you a bit of background, a bit of history. So Informa has been running Arab Health for 30 years in Dubai, and from there has been launching events all over the world.